Well, we were discussing about BERT, and in BERT, previous class, I have shown you some quotes how to use BERT. We are following up ahead related to it, like because BERT is also a transformer model, and BERT is actually encoder. Okay, we do have encoders only in BERT, and that is bidirectional encoder by encoder. And you very well know what kind of task this encoder do. Okay, since it's a transformer bidirectional encoder architecture, we do have attention mechanism in it. Self attention is applied here, and it do have multi self attention, so we can say it as multi head. As per what we have seen in the code also, it comprises of 12 encoders. Okay, so every encoder do have attention mechanism in it. Fine. And the working relies on the left to right and right to left interpretation of data. This will help in bidirectional context analysis, better understanding of the text. Okay, so let me share my entire screen where we have printed the attention weights also using BERT. Okay, so this is the code after attention mechanism where we are taking torch, BERT model, and the BERT tokenizer. I did started with the BERT tokenizer itself, where you give text as an input and you perform tokenization. That is the word piece tokenization. That is easier for my model to understand the context. We are loading both of them, and here is the text. BERT attention mechanism is fascinating, and then we are giving this text as an input to the tokenizer. It will return the tensor output. Okay, it will return the tensor value, and then this tensor value will be given to the model as an input, and we are trying to output the attention weights which are calculated. Okay, and here we can follow up the code for it. So here is the code what I have shown you, and it will print the attention weights for the text which you have input. Okay, so you can see these are the attention weights. Okay, so for a simple sentence only, these much are the attention weights. See how much long it is. I'm just keep on scrolling for it. All right. Still it is long. It's not completed yet. It's keep on going. All the weights. Fine. It ends here. So what would have happened here in the BERT? We have given a simple text. BERT attention mechanism is fascinating. This is the text you have given. In tokenization, that will be like simple. BERT attention mechanism is fascinating. That will be the tokens. And when you have given these tokens to the model,
And when you are outputting the attention weights, see how much, for a single sentence, how many attention weights you are seeing. So these weights show how much attention BERT pays to different words in a sentence. And so much, we are having only one sentence. And when we printed the attention weights, it was so much attention weights present. The mechanism of attention we know, the mass of attention we know. Obviously, that is your Q, K, and V. But this much for a single sentence? We know that you do have 12 encoders, and every encoder is having attention mechanism. So this text has been given to each and every encoder, and it's multi-head. That means I think in an encoder also you are having multiple attention mechanism. You have to check it what the architecture says. We have put this as a comment in the previous code. Let's see. In the previous code, we can check about the architecture, what it says. I have mentioned in the previous code somewhere. Okay. Here it is. This is the technical configuration of BERT. It do have 12 attention head. Okay, so 12 attention heads. So 12 attention mechanism. It is having transformer blocks as 12, and every block is having attention mechanism. So 12 attention heads it is saying. So whatever be the output which we are seeing is from these 12 attention heads only. Okay, we do basic maths for understanding, but there are many more things which are happening inside the architecture. Not every component, not everything is displayed to you. Only the core components are shown. Okay, and you have been taught accordingly that in attention, self attention, you have this Q, K, and V. You perform Q dot K to get attention score, and then with this attention score, you do perform the scaling, and then this is your scaled attention score, and this scaled attention scores are given to softmax to get the probability self attention score. And this probability self attention score, we do perform the dot product with V. These are the final output. Okay, so the result which has been shown to you, BERT, is fascinating. Okay, what the code says. Okay, here are all the attention values. You can see. Sir, that means are these weights are like printed training or what? We haven't done any kind of training. Okay, just see. This is 1, then this is 2, this is 3. Okay, how many words are there? In your sentence, bird's attention mechanism is fascinating. One, 2, 3, 4, 5. Okay, just check it. What you are getting? One, 2, 3. Okay, dot, dot, dot. I'm not sure that only 5 are there. Are we outputting the tensor value also? Okay. These are okay outputs. Okay, we are only having the print attention weights.
Nothing more we are outputting. So these are the attention weights only. These all are attention weights. So long. Okay. So it ends. Here it ends. Then again, this is another, and this is another, and so on. It continued. So it finished. For example, it finished here. Okay, and then one, then again it started. Two, then again it started. Okay, something here like three dot 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 up to so long. Okay, so for a single sentence, how much attention weights we are getting, and what we have studied in a simple way, this approach. And according to the architecture, it has been told, okay, you do have 12 encoder, 12 encoder layers. Okay, so if we again check out the architecture which has been mentioned to us previously, okay, here it is. So here we are having 12 encoder layers, 1, 2, and dot 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 up to 12. And we are having 12 heads. Okay. And from every head, we are getting some attention scores. And this is only an encoder representation. We don't have any decoder here. But only have encoder, no decoder. Okay. So what we have learned in a basic maths and what we are seeing here as an output, there is a lot of things. What you learned is just a mechanism, few steps of attention, and a very simple way that how you tokenized, how you converted it into vocabulary, how you perform its vector embeddings, and then how you perform the dot product. That's all. The process is very simple. I taught you multiple times. But when you see the output, when you see the attention weights, it's a long list. Okay. It needs to be. That's why I say explore. Okay. Anyways, so attention weights can be printed, and that's how we did in this example. And the BERT training, so many times I told, it's no sense to repeat it again. For BERT training, you have masking and NLP. Next, NSP. Next, sentence prediction. Masking and NSP. Okay, so we took BERT for mask language model and BERT tokenizer again. BERT tokenizer will be the general one. It will come again and again. Okay, here is what you're taking torch. You tokenized. You took mass model, and you gave here as a text. BERT is a powerful language model. You perform the tokenization. You added the special tokens. Special tokens will be CLS and SEP. Okay, CLS will be for classification and this is for separation. Okay, and then again you give this thing to the model. Okay, you gave this thing to the model and you are printing the loss. So here we are demonstrating pre-training BERT's mass language model. The model predicts the mass word while being trained to minimize the prediction error. Okay, whatever be the words which are marks, which are not made visible for the BERT, this code is meant for that. And if we check the implementation here in the Kaggle, what output it gave, okay, so check. This is the same code which I copied from there and pasted here. And then
The output I'm getting here is tensor 4.0929. This is what I'm getting. Okay. And this is why tensor, your model is returning a tensor value. And that's what we have learned after tokenization. After creating tokens, you have to convert these tokens into tensor, because tensors are being expected by the BERT transformer. Okay, as an input. So you have to give tensor value. So it is outputting a tensor value. Whatever be the marks word is there, it will output that. Okay. However, in this particular code, I haven't seen that we did marks anything. Okay, in this code, we haven't performed any masking. Okay, can you see here? No masking we have done. We just gave a text. BERT is a powerful language model. Full stop. No masking we have done. We have tokenized this text only, and we have given this thing to the model itself. Okay, mass language model. We have given it. So what word it masked, whether it marks powerful, whether it marks language, what it masks, we don't know. Okay, fine. There are few more things to be printed here. If we check, let me edit this code, because here a term input ID is also present. Okay, so okay, there is no data set, so ignore this part. Okay, so here is your current code of masking, and above code is of attention. Let me increase the size. So this code is of attention. We are taking uncase model only. Okay, no case sensitive. Uppercase and lowercase is all accepted. We gave it to the tokenizer. Whatever be the output it gave to the model as an input. That will be a tensor value. Okay. Here, if you say, sir, kindly print the inputs also, at least we can see how inputs are looking, what tensor value it give. Okay, so we can do that. And right now, let me put a comment on these attention weights. Okay, and let's print the input and the output, which has been given to the BERT model. Outputs. Okay, let's check what is given. Let me run the code. Fine. So here is my session starting. Session started, and we want to print what is the value of the tensor for BERT. Is BERT attention mechanism is fascinating. This is the text we have given. I want to see the tensor value of it. So it loaded BERT. Here are the tensors. It gave some warnings, and see input. These are the input IDs. These are the tensor value. Input IDs 101, 14324, 10553. See this much. And this is the token type IDs. These are token type IDs. Tensor all 0, attention mask all 1. And base model output with pooling and cross attentions are these. See how much value these are again. And this is for backward. Okay, and see these. How many values it printed?
We just gave a simple sentence and see how many values it printed. It first inputted the, that means softmare's backward. Okay. So forward and backward mechanism both are being applied here. Okay. So what you see in architectures, that is simple. What you learn in form of concept, that is simple. But when you check, okay, let us apply and print it, so many values are there. For a single sentence, this much values are calculated for a single sentence. Okay, I just called for this one. Bird's attention mechanism is fascinating. I gave this text as an input to the tokenizer to token it. I should be getting word piece tokens. That's what I should get. I printed. I printed it. And this is what I got. Okay, fine. So what I think is 101, 14324, 1, these are the values of word piece tokens. And this is the token type ID. Token type ID means token type ID. It's saying that okay, it's all zero, it is marking. And here it is giving attention mask equal to all one. That means masking, attention mask, all one. That means model is not knowing what should be the, about the masking, attention masking. That's what it is doing, attention mask. And all are assigned 0. IDs all are assigned 0 and masking all, okay, true for every word. It is true. And these are the tensor values. Okay. If we want to see only, sir, please, word piece values, can you print only the word piece value if it is possible? Because when we started our code here, tokenize text, can we just do this thing? And can we print the tokens, okay, from the word tokenizer? Just the tokens only. Okay. So control V here, tokens equal to tokenizer dot tokenize text. So tokenizer, huh, it will take text and it will print the tokens, just tokens. I'm not saying return tensor, I'm not saying padding, I'm not talking about the truncation, nothing. I'm just saying that print the tokens. I just want to see the tokens. Let's run the code. Hmm. Here it is. And I understood from that only. BERT, then apostrophe, then S, then attention mechanism is fascinating. Full stop. And 101 is for BERT, apostrophe is for 14324, S 1, S is 1005, attention is 1055, mechanism is like this, I think 3086, something like that. Is, and some, I think it should have some notation related to it. How many we are getting? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 word piece tokens. Here how much we are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. We are having 10 values for the tensors. These are 8, and here I am having 10. And you should be knowing why it is 10. Why it is 10? This is for CLS and this is for separator. So two
two special tokens, na. So meanwhile, in between are for the word, and additional two are for special tokens, CLS and separator. Okay, and these are the tensor values. Okay, for each and every token. Then this is your token type ID. Token type ID, it assigned, okay, all zero. Attention mask, all one. So these, okay, token type ID. Token type ID, we are assigning IDs to the tokens. These are the input ID. That means these are the integer values. These are the integer values assigned to every token. So you can understood by this that these are the vocab. I already told you now. Converting token into integer is called as a vocab. So it created a vocabulary here. And then this is an ID assigned to it. Every token ID it's assigned it as 0. Because I guess this is the first sentence. Now only one sentence is there. What if I am having two sentences? If I write two sentences, then what will happen? Bird's attention mechanism is fascinating. I like to study it. Now I am having two sentences. Let me run the code again. Okay, now check. Now check. So these are all the word piece tokens. Then how much we are having? 101, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 we are having. 16 IDs we are having. So how it will become 16? How it become 16? The reason is okay, just check it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So 13 and 14, they are 14, we are having 16. Obviously, special tokens, CLS and separator. And these are the integer representation of all these tokens. Now again, see, uh, token type ID, all 0. Attention mask, all 1. So this is initial token type ID. An ID is given to the tokens. The first one is the integer representation, that is a vocab. And this is the ID given to the tokens. And this is the masking given to the tokens, all 1. After that, ये तो आपका वो बेसिक प्रिंट करवाया अभी. ये मैंने पहले आई जस्ट प्रिंटेड द टोकन्स और फिर ये टेंसर रिप्रेजेंटेशन था यहां तक. टेंसर रिप्रेजेंटेशन. Okay, that means वो initially the entire text is given 0 ID and attention mask उसको all 1 करता है वो initially. देन फिर क्या होता है देखो, बेस मॉडल आउटपुट विद पूलिंग एंड क्रॉस अटेंशंस. तो आप ये मत समझना कि सिंपल एक अटेंशन लगा दिया, नहीं भाई, वो क्रॉस अटेंशन अंदर बहुत बड़ी कहानी चल रही है आपको. यू हैव बीन नेवर टोल्ड द एंटायर स्टोरी. ये तो अभी मैंने पकड़ी आपको, मैंने सोचा कि चलो ठीक है बताऊं तो सही क्या हिसाब चल रहा है. वो खुद बोल रहा है बेस मॉडल आउटपुट विथ पूलिंग मैकेनिज्म, कुछ है ऐसा, पूलिंग लगा रहा है वो, एंड क्रॉस अटेंशन, लास्ट हिडन स्टेट इक्वल टू टेंसर. और अब जब आउटपुट देखोगे आप तो गजब ही है फिर. ये देखो अभी, अच्छा क्या, व्हाट इज आउटपुट वी आर ट्राइंग टू गिव, दिस इज द आउटपुट. ठीक है, वी आर शोइंग दिस एज एन आउटपुट. अभी इतना आउटपुट हम शो कर रहे हैं. ओके,
इनपुट तो कर दिया मैंने प्रिंट, नाउ आई एम शोइंग द आउटपुट। तो आउटपुट व्हेन आई एम शोइंग, आप देखिएगा ये यहां से पूरा ये आउटपुट शो हो रहा है। ओके, व्हेन आई गेव दिस स्टफ टू द मॉडल, इट गिव्स मी सो मच नंबर्स, और ये फिर हमें लग रहा है, ये बता रहा है बैकवर्ड 10H हिडन स्टेट नन, पास्ट की वैल्यू नन, अटेंशन अगेन, और फिर यहां से ये शुरू हो गया, अगेन इट स्टार्टेड, ये और वैल्यू दे दिया फिर इसने। दीज आर द आउटपुट्स। तो एक सिंपल सेंटेंस के लिए कितना मैथ्स, हाउ मच मैथ्स इज रिक्वायर्ड? ओके, 2 सेंटेंसेस लिखे, उसमें इतनी मैथ्स लग रही है। सी मेरे नंबर से खत्म नहीं हो रहे अभी तो, देखिए इट्स नॉट गेटिंग ओवर। कितने आउटपुट प्रिंट करवाऊं? एंड अकॉर्डिंगली आई हैव बीन टोल्ड दैट कि ओनली 12 एनकोडर है उसमें। तो यदि 12 एनकोडर है, सो इतने सारे आउटपुट्स कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग सो मच? ये तो आउटपुट ही खत्म नहीं हो रहे। सी यहां जाके खत्म हुए, और अभी मैं अटेंशन वेट प्रिंट कराऊंगा, देन अगेन आई विल बी हैविंग सो मेनी थिंग्स। ओके, तो भाई सीधी बात है, आपने जरूर क्रॉस कनेक्शन, वो बोल रहा है ना, क्रॉस कनेक्शन इज देयर। इट मे हैपन दैट कि आपके पास 12 एनकोडर्स आर प्रेजेंट, इट मे हैपन दैट यू आर हैविंग 12 हेड्स, okay, and a head is called as a self attention. So just right now we are assuming we are having 12 self attention, and if we see our calculation for self attention, this is just a calculation for self attention, and the output which we have seen, huge, so many numerical values. So how many times it is doing the self attention? There are some question, how many times it is doing? And are you sure that there are only 12 self attention? Okay, so यदि 12 थे, and from every self attention I am getting output, तो I should have only 12 output. लेकिन इंटरनल जो पूरी मैथ्स हुई ना सर, वो तो बड़ी समझ में आना कठिन है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी इतना ही समझ में आया कि सर द ओनली बेसिक स्टेप वी अंडरस्टूड, सर आपने यू गेव द टेक्स्ट, और उसके टोकन जो प्रिंट हुए ना सर, वो समझ में आ गए। टोकनाइजेशन वी अंडरस्टूड, वो बना के बता रहा था वर्ड पीस टोकन्स, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद सर वन वन मोर थिंग वी अंडरस्टूड सर, जहां उसने उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी है, और वी वर हैविंग 12 वर्ड पीस टोकन्स, उसने 16 बनाए थे। तो एक सीएलएस था और एक सेपरेटर था, है ना, वो स्पेशल, ये भी समझ में आ गया सर। फिर इट टुक इनपुट आईडी, जो कि सब सारे जीरो कर दिया उसने। इनपुट आईडी आर ऑल जीरो, तो पूरे 16 जीरोस लगाए थे उसने। और फिर मास्क सबको वन कर दिया, इनपुट मास्क ऑल वंस, इट्स राइटिंग इट एज टेंसर, ये भी टेंसर, ये भी टेंसर, एंड इट्स लाइक मैट्रिक्स विद इन अ मैट्रिक्स। वो 2D था वो, दैट इज अ 2D। तो ये इनपुट आईडी है और ये इनपुट मास्क है। तो आईडी एंड मास्क आप ये दे रहे हो फॉर दिस वोकैब, दैट मीन्स इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, जो आपके यहाँ है उसके लिए आप दे रहे हो। सो हर एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन का यू आर हैविंग आईडी एंड इट्स मास्क, दैट मीन्स आईडी इज 0 एंड मास्क इज 1 इनिशियली, दैट्स व्हाट यू आर असाइनिंग। एंड देन फिर आपने क्या मैकेनिज्म करा, उसमें कुछ चीजें मुझे दिखी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये मुझे दिखा कुछ। तो भाई हमें यही समझाते आ रहे और बड़ा इजीली समझ लेते हैं, हाँ हाँ बाई डायरेक्शनल है ना सर, बाई बाई बर्ट बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर। तो सर फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब ये होगा, यू आर
dealing the text from the forward, that is left to right, and then backward, right to left, यही होगा. That is what it means. तो फिर भी इतनी सारी वैल्यू. समवेयर वी हैव सीन क्रॉस कनेक्शंस, वो बोल दिया मैंने अटेंशन के साथ. कैलकुलेशन ऑफ वेट्स. तो भाई सीधी बात है, वो वेट का कैलकुलेशन होना. ओके. ये आपके जो है एनकोडर के अंदर, ऑब्वियसली यू आर हैविंग, इट्स अ न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, वहां पर यू आर हैविंग लीनियर लेयर्स ऑल्सो. ठीक है, न्यूरॉन्स होंगे. तो हो सकता है वो, अच्छा न्यूरॉन्स में भी वो 568 करके बोला था अभी, ध्यान देना. इट गेव यू, क्योंकि पूरा आंसर तो प्रिंट नहीं करा उसने, डॉट 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 इट वाज शोइंग. तो व्हेन आई रेफर टू अबाउ कि इनपुट आप 568 का दोगे, हियर यू कैन सी. हाँ ये रहा. हाँ, हिडन साइज है 768. 512 का टोकन है साइज, सॉरी, नो नॉट 568. 768 इज द फीचर डायमेंशन एंड 512 इज द टोकन्स. इतना मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ है. तो आपकी तो सीक्वेंस लेंथ तो बहुत छोटी थी ना, ओनली 16 ही तो है. सो यू आर गिविंग ओनली 16. हाँ, हिडन साइज जो है 768 का. तो वो अंदर आप जो वो पूरा देख रहे हो ना, वो नंबर अंबर लिखे हैं, वो 768 तक होंगे शायद, क्योंकि हिडन फीचर साइज का यही है. 12 हेड्स हैं, वो कैप साइज 30,000 की है मैक्स. 30,522 वर्ड्स इट कैन अकोमोडेट, मतलब इतना इतना वो पढ़ा लिखा है इतने वर्ड्स पे. तो ठीक है, ऐसा कुछ है. अभी अज्यूम कर पा रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग. ओके, अब एक्चुअल आर्किटेक्चर तो फिर बनाना वाला, आप सोचिए क्या होगा. ओके, so it just came into my mind to show you that these are the outputs. Okay, we can print each and every step if you really want to be an engineer and you want to understand that what these are working for, how the things are working. Or then in the next code, masking. ये masking करा है. Here you gave text, BERT is a powerful language model. Which word we mask? We haven't given anything. Nothing. ये पूरा वैसा की वैसे ही code है. Same code is there. And again it will show you, okay, वो आपको लॉस प्रिंट करेगा यहाँ पे. फाइन. इफ आई रन द कोड इट विल प्रिंट द लॉस. हियर इट प्रिंटेड द लॉस. लॉस बैकवर्ड ग्रेडियंट FN टेंसर 4.0929. दैट मीन्स वो जो सेंटेंस है उसके हिसाब से इट्स गोइंग टू कंसिडर एनी ऑफ द वर्ड विच इज बिन मास्ड वर्ड. either it is powerful, either it is language, it's not been telling क्या मास्किंग हुआ. अच्छा, प्रोसेस वही है. अच्छा, मास्क तो भाई फिर मेरे दिमाग में आ रहा है एक बात और. सर ये जब आप टोकनाइजर करते हो, स्पेशल टोकन्स आपने ऐड कर दिए, एंड इफ यू प्रिंट दिस थिंग, तो सर वो तो मास्क तो 1111 इट इज टेकिंग, सभी को तो मास्क कर रहा है वो. और इफ यू प्रिंट इनपुट्स ऑल्सो, तो वो सर ये भी हमें समझ में आ रहा है आईडी. ओके, आईडी है ना. अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, ये वार्निंग आ रही है ना मुझे, ये वार्निंग बड़ी परेशान कर रही है. ओके, बार बार इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे वार्निंग को. सो लेट्स डू वन थिंग, वार्निंग को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं. कंट्रोल C एंड लेट मी टेक इट बैक हियर. कंट्रोल V. ये वार्निंग नहीं चाहिए मुझे, हटाओ इसे. लेट मी रन द कोड अगेन. अभी भी वो दे ही रहा है, द पैरामीटर कंटेन्स गामा बीटा टू वेट बायस रीनेम इंटरनली. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपेंड हियर. अभी भी दे ही रहा है वार्निंग को, और ये कुछ आउटपुट दे दिया. सी व्हाट इट इज शोइंग. एक लाइन भी अपन पढ़ लें. अ पैरामीटर नेम दैट कंटेन्स बीटा विल बी रीनेम्ड इंटरनली टू बायस. प्लीज यूज अ डिफरेंट नेम टू सप्रेस दिस वार्निंग. व्हाट शुड आई डू. तो ये इतनी वार्निंग, इसने वो नेम वेम चेंज कर रहा है इंटरनली. क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं. इसकी प्रोसेस है. या बीटा गामा बीटा गामा बीटा गामा, all these things. Some weights of the model checkpoint are BERT based in case were not used in the initialization. We are having bias also, we are having dense weights also.
रिलेशनशिप, देयर आर मेनी थिंग्स। आप सिर्फ कोड को चला लेना कुछ नहीं होता। आर्किटेक्चर एंड द एंटायर वर्किंग अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या करें? ठीक, इतना कुछ तो समझ में आया कि ये बहुत हाई लेवल का जो कनेक्शन अरेंजमेंट है, द आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, दैट इज फैसिनेटिंग एक्चुअली। ये जो टर्म लिखा है ना, वो फैसिनेटिंग है। ओके। और यहाँ फिर अगले में वर्ड एम्बेडिंग्स आई एम प्रिंटिंग, प्रिंट द वर्ड एम्बेडिंग्स ऑल्सो। चलो देखते हैं हाउ इट्स गोइंग टू प्रिंट द वर्ड एम्बेडिंग्स। ये देखिए अगेन। और हाँ, ये वर्ड एम्बेडिंग्स है। अब हाउ मेनी वर्ड्स आई गेव? BERT embeddings are fascinating. And what we study? We study that, sir, BERT embeddings are fascinating. So इसको word piece में अपन break कर लेंगे. And for every word there is a vector representation. That is what we call as an embedding. और फिर क्या सिखाया था बेसिक में? सर पोजिशनल एम्बेडिंग भी होती है। सेल्फ अटेंशन में वर्ड एम्बेडिंग प्लस पोजिशनल एम्बेडिंग बोथ आर गिवन एज एन इनपुट। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। तो वो दोनों गए, बोथ विल बी गिवन एज एन इनपुट। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा, ये तो अभी कितने 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, वर्ड पीस में हो सकता है 5 और 6 में कन्वर्ट हो जाएं। बाकी आपने कहा तो सर द लेंथ ऑफ द टोकन विल बी 512। तो सर ऐसा तो नहीं वो बाकी इसके पीछे आपने बोल दिया ना पैडिंग ट्रू, तो भाई ये पैडिंग ट्रू करने का लफड़ा है ये पैडिंग ट्रू करने के चक्कर में तो नहीं वो पूरी की पूरी सीक्वेंस 512 की बना के बैठ रहा है। बिकॉज यू आर डूइंग पैडिंग ट्रू, तो उसको अपनी सीक्वेंस की जो लेंथ है वो मेंटेन करना पड़ेगी पैडिंग करने के चक्कर में। अच्छा, इसी कोड को इफ आई अगेन रन रन इट, समझने वाली बातें हैं सारी, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो सब आंसर देने पड़ते हैं, बताना पड़ेगा। इफ आई से पैडिंग ट्रू को मुझे नहीं चाहिए, ट्रंकेशन भी मेरे को नहीं करना, हाँ स्पेशल टोकन्स यू कैन ऐड, दैट्स व्हाट यू कैन डू। ओके, ये आप कर सकते हो, स्पेशल टोकन्स यू कैन ऐड, CLS एंड सेपरेटर। बाकी ठीक है, आप ये कर दीजिए। और यहां पर इफ आई डू प्रिंट द इनपुट्स, प्रिंट इनपुट्स एंड प्रिंट आउटपुट, ओके, प्रिंट आउटपुट्स, ठीक है। इफ आई डू दीज थिंग्स, अभी वर्ड एम्बेडिंग्स आई एम हाइडिंग, आई एम नॉट शोइंग दीज वर्ड एम्बेडिंग्स, ठीक है। लेट मी रन द कोड। क्या शो कर रहा है ये? ओके, तो भाई देखिए, इसने ये इनपुट आईडी क्योंकि वर्ड पीस में कन्वर्ट करा होगा, तो दीज आर द इनपुट आईडी, टोकन टाइप वही 0 है, मास्क 1 है, एंड देन व्हाट आई डिड हियर, ये देखो, ये फिर वापस से इतना कुछ आउटपुट प्रिंट कर दिया उसने। ओके, एंड हाउ मच इट विल बी लाइक, ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 एंड okay, 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, 8, and how many these rows will be? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 40 rows हैं, so 8 4 the 32, 50 हैं, so how much it will be? 400, 8 into 50 is 400, 9 है, तो 8 8 मतलब 9 नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, 50 यदि रोज हैं तो 50 इंटू 8 इज 400, 60 रोज हैं तो 448, सो यदि 60 रोज हैं, ये दीज आर द 60 रोज, इफ दे आर, तो आई थिंक इट्स मेकिंग, अच्छा वो तो मैंने हटा ही दिया था ना, पैडिंग ट्रू भी हटा दिया था मैंने, सिर्फ ओनली आई टॉक टू ऐड द स्पेशल टोकन्स, इतना ही बोला था, नथिंग एल्स आई टोल्ड। तो आउटपुट में व्हेन इट गिव,
इनपुट टू द आउटपुट, मतलब इनपुट दिया मॉडल को, आउटपुट में इतना फिर क्यों बता रहा है वो? व्हाट इट इज शोइंग फॉर दीज न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यू? बेस मॉडल आउटपुट विद पूलिंग क्रॉस अटेंशन, इतना कुछ। फिर नेटिव लेयर नॉर्म बैकवर्ड आउट पूलर आउटपुट टेंसर, and this much values it calculated. Yeah, again 10h backward, hidden states none, pass keys values, attention none, cross attention none, क्या है ये सब? इसी के बारे में ही पढ़ना और समझना पड़ेगा. If you understand this thing, then you will be able to crack what's been there in the GPTs and the rest of the models which are used. ठीक है. I want to speak few more terms here जो बतानी है. ये वर्ड एम्बेडिंग्स के बारे में बोल रहा है. तो अब अच्छा देखो, ये जब डायग्राम व्हेन वी सी ना तो बहुत अच्छा लगता है. अरे सर ये तो आता है सर. आप टोकनाइजेशन ना सर, हाँ पता है सर टोकनाइजेशन. सर ये देखो, व्हेन यू गिव अ सेंटेंस अ विजुअली स्टनिंग रिमेमोरेशन ऑन लव, टोकनाइज करेगा तो वो सर वो वर्ड पीस बना देगा और आगे CLS और SCP लगा देगा. सर आता तो है सर, वेरी इजी. भाई जब प्रिंट करवाया तो भी तुम्हें मजे आ गए. ये तो देखने में तो बहुत प्यारी लग रही है. ठीक है. तो वर्ड एम्बेडिंग वी नो कि उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होते हैं. ठीक है. और कंटेक्स्ट एम्बेडिंग में क्या होता है, दोज वर्ड्स विच आर हैविंग द सेम मीनिंग, उनको एक ही वेक्टर असाइन कर देता है वो. ओके, सेम वेक्टर. तो भाई वो इतनी लंबी चौड़ी जो दिख रहा है हमें, ये नंबर वंबर दिख रहे हैं, ये नंबर वंबर जो दिख रहे हैं वो वर्ड एम्बेडिंग्स हैं. दे आर वर्ड एम्बेडिंग्स. और यदि वो हैं तो इतनी बड़ी लेंथ, हर एक वर्ड की इतनी बड़ी. मेरे पास तो वर्ड पीस में आई थिंक वी आर हैविंग 6 वर्ड्स, फॉर एग्जांपल 6 वर्ड पीस टोकन्स हैं. तो एवरी वर्ड पीस टोकन्स, व्हाट विल बी द लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वर्ड एम्बेडिंग, क्या होगी वो? अच्छा, ये हमने पढ़ा है कि एम्बेडिंग कंटिन्यूस होती है. कंटिन्यूस में भी नेगेटिव भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीन्स -0.612. चेक करो जरा, दिख जाएगी. सी, ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं. तो ये एम्बेडिंग्स हैं. तो इतनी बड़ी एम्बेडिंग्स, ऐसा तो नहीं आपने, ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, अब बीच में डॉट डॉट लगे, मुझे पता ही नहीं कि और कितने हो सकते हैं, पता नहीं. ये टेंसर आउटपुट कर रहा है तो एम्बेडिंग तो गई होगी. ये देखो बोलता रहा है एम्बेडिंग है, क्योंकि टोकन के बाद एम्बेडिंग ही बनेगी. ओके, तो वर्ड पीस ही कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी को हैंडल करता है एंड देन वी आर हैविंग एम्बेडिंग. अच्छा, पोजिशनल भी होगी, तो वर्ड एम्बेडिंग्स भी होगी, पोजिशनल एम्बेडिंग्स भी होगी, दोनों होगी. एंड वर्ड एंड पोजिशनल विल बी एडेड. दैट्स व्हाट यू हैव लर्न इन सेल्फ अटेंशन. तो इनकी लेंथ क्या है मुझे पता नहीं. व्हाट्स द लेंथ ऑफ द एम्बेडिंग्स? और ये एम्बेडिंग को आपको पहले टेंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल टेक एज एन इनपुट. एनकोडर तभी लेगा, एनकोडर विल टेक द टेंसर, तभी वो टेंसर में कन्वर्ट कर रहा है. रिटर्न रिटर्न PT. सो अच्छा, ये सब पढ़ रखा है, वी ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग कि सर पहले वर्ड टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के टोकन होते हैं, टोकन के वर्ड पीस टोकन होते हैं, वर्ड पीस का वोकैब बनता है, वोकैब की एम्बेडिंग बनती है, एम्बेडिंग में सर वर्ड एम्बेडिंग होती है, पोजिशनल एम्बेडिंग होती है, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद एनकोडर को देते हैं, जहां पर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है. तो भाई आपने ये काम करा, वेक्टर बनाया, वेक्टर को टेंसर में कन्वर्ट करा. ओके, टेंसर में कन्वर्ट करने के बाद यू गेव इट टू द एनकोडर जहां पर अटेंशन मैकेनिज्म है. कितने अटेंशन है? बोल रहा है 12 है. भाई इतनी लंबी चौड़ी, तो तुमने ये बताओ कि एम्बेडिंग कितनी बनाई थी, वो लेंथ क्या थी, और आपने टेंसर में कन्वर्ट करा, तो टेंसर टेंसर जो बना उसका डायमेंशन क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टेंसर? कितने डायमेंशन का बना रहे हो? हाउ मच? और अंदर टेंसर क्योंकि हमने तो सेल्फ अटेंशन में सिर्फ ये पढ़ा था इतना कि वेक्टर और वेक्टर होता है और ये होता है वो होता है, इतना. आप यू व्हाट यू डिड इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड. आपने तो बहुत सारी काम कर दिए वहां पे, इतना मैथ्स, पूरा ही मैथ्स. गजब कहानी है. ठीक है, अभी कोड वोड दे रहा है, ये तो सब चला लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं. तो की फीचर्स यदि हम बात करें बर्ट का, तो बर्ट इज एनकोडर ओनली. ठीक है, यहाँ डिकोडर नहीं होता.
It is encoder only. It is a transformer encoder which process input bidirectional, okay, left or right. That's it. It took entire context of the word. इतना, बस इतना करता है ये. मास्किंग करता है, इट वर्क्स एज अ मास लैंग्वेज मॉडल एंड ऑल्सो नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन. ये दो काम है बर्ड के खास. ठीक है. एंड कंटेक्चुअलाइज वर्ड रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स वही वर्ड वेक्टर में, vector embeddings. It will produce a single vector for each word regardless of the context. BERT generate different embeddings for a word depending on its surrounding words. अच्छा, ये बात है. देखिए, हो सकता है कि आपने लिखा द, वो लीड वाला एक सेंटेंस था ना, ही विल लीड, टू लीड समथिंग करके था. तो लेफ्ट हैंड साइड से लीड और राइट हैंड साइड से लीड दोनों का मतलब अलग था. तो और एक वो भी पढ़ा है हमने, वो बैंक और रिवर वाला. ओके, तो लेफ्ट एंड राइट के इंटरप्रिटेशन से ये कह रहा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन एम्बेडिंग और इसका एम्बेडिंग विल बी डिफरेंट. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. It will produce a single vector for each word regardless of context. BERT generate different embeddings for a word depending upon its surrounding words. तो जैसे उसके आसपास के वर्ड्स होंगे अकॉर्डिंगली वो इसकी एम्बेडिंग बना देगा. ओके, सो बात तो है. सेंटिमेंट एनालिसिस, एनईआर, क्वेश्चन आंसरिंग, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में इसका बर्ट का अपन वी डू यूज एप्लीकेशन है. इफ यू डू कंपेयर द बर्ट विद जीपीटी एंड अदर ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है. इट यूज ओनली द डिकोडर पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एंड आर डिजाइन प्राइमरली फॉर टेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो जीपीटी हम सिर्फ डिकोडर पार्ट का यूज करते हैं. अभी ये आपको पता ही नहीं होगा, डिकोडर ही तो जनरेट करता है टेक्स्ट, है ना. वो अटेंशन में जीपीटी, आप पता, यू वेरी वेल नो द एंटायर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, बट व्हाट इज यूज्ड ये जीपीटी में ये नहीं पता था. जीपीटी सिर्फ डिकोडर पार्ट का यूज कर रहा है ट्रांसफॉर्मर का, क्योंकि वो टेक्स्ट जनरेशन के लिए है. T5 and BART, that means these models are both encoder and decoders, can handle various tasks, summarization, text summarization, translation. लेकिन ऐसी बात नहीं है जीपीटी नहीं कर सकता. वो भी यहाँ सेंटेंस लिखा है, मेनली टेक्स्ट जनरेशन इज द टास्क फॉर द जीपीटी. ओके, फाइन. तो इतनी बातें थी जो मुझे आज कहनी थी. बाकी देर आर सम मोर थिंग्स आर लेफ्ट. दैट मीन्स द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द बर्ट, उसको एक ओवरव्यू वी विल डू, कर लेंगे. जैसे एल्बर्ट है, रोबर्टा है, डिस्टिलबर्ट है, इलेक्ट्रा है. सो दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बर्ट मॉडल जो एडवांस्ड हैं बर्ड्स से. ओके, तो ये अपन और वी विल स्टडी. ठीक है, फाइन, यू गॉट इट. मी स्टॉप रन टाइम.